Good evening, dear students. Today I am going to discuss first degree, second degree, and third degree alcohol preparation. How to prepare easily first degree, second degree, and third degree alcohol. I already discussed. Remind you. Just I remind you. Last class already I told you. Formaldehyde react with Grignard reagent and intermediate is formed. एंड जो इंटरमीडिएट मिलेगा उनको हमें क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोलाइज करेगा. एसिडिक हाइड्रोलाइज करने के बाद फर्स्ट डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा. सिमिलरली एनी एल्डिहाइड react with Grignard reagent, intermediate is formed. This intermediate going for acidic hydrolyze and result is second degree alcohol form. For third degree alcohol, just we need ketone. Ketone react with Grignard reagent, intermediate is formed, and intermediate is acidic hydrolyze, result is third degree alcohol. Let's see one by one. I am going to discuss. Let's see. First degree alcohol. First degree alcohol. So formaldehyde, HC double bond H. It is formaldehyde. Formaldehyde. Or methanol. Or methanol. Methanol. React with Grignard reagent. What is Grignard reagent? Generally, मैंने क्या बोला था? Grignard reagent is known as organometallic compound. Grignard reagent is RMgX. And this is देखो hydrogen carbon, hydrogen position is same, and this double bond between oxygen and carbon atom, and one bond is going for overcome here. Overcome. Suppose कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में वन ऑलरेडी है, ऑलरेडी वन बॉन्ड एग्जिस्ट एंड वन बॉन्ड गोइंग फॉर ओवरलैप. दिस इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्सीजन एटम, अनदर इलेक्ट्रॉन फॉर कार्बन एटम. Similarly, this is Grignard reagent. It is also going for overlap. So one are definitely attached with carbon atom and fulfill their valency of carbon atom. And next magnesium halide part, MgX. This is, and it is known as intermediate. Intermediate. And this intermediate going for acidic hydrolyze. We know that acidic hydrolyze के लिए we need water molecule, either water molecule or hydrochloric acid. Thus we need proton. And HCHR and oxygen have lone pairs directly help to the protons. OH group attached there. Alcoholic group is coming as a result. Due to the presence of R1R, it is known as first degree alcohol. Understood what I said? In this way, we can easily prepare first degree alcohol. Another one you will see second degree alcohol. Second degree alcohol के लिए हम क्या करेंगे? इस बार हम क्या करेंगे? Formaldehyde consider नहीं करेंगे. Any aldehyde. तो any aldehyde, this is already our aldehyde group, and just we any aldehyde R attached here, and it is any aldehyde plus Grignard reagent. The remaining process is same. R C H and one bond is going for overcome. R is coming here. O MgX. MgX acidic hydrolyze, and R C H R O directly attached with proton. The remaining part is byproduct. Byproduct भी हम लिख सकते हैं MgOH(X). Here also MgOH(X). And due to the presence of two alkyl group and monohydric alcohol, two alkyl group, it is known as second degree alcohol. And similarly, third degree alcohol, you see. Already I told you third degree alcohol, we need ketone. Ketone need to be that is a ketone. R C double bond R plus R MgX R. Similarly, one bond going for overlap here. So here R is overlap R MgX. They already three alkyl groups are here. So
acidic hydrolysis, RCROH. Remaining part is byproduct X, and due to the presence of 3 alkyl group 1, 2, 3, it is third degree alcohol. It's third degree alcohol. These are the preparation method of first degree, second degree, and third degree alcohol. Understood clearly? In this way, easily prepare first degree, second degree, and third degree alcohol. And कभी-कभी क्या करेगा एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बोलेंगे द राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री alcohol. I already told you in organic chemistry question is come indirectly. So ultimately we are going to prepare for first degree, second degree, and third degree alcohol. कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सपोज मान लीजिए कन्वर्ट, ये फर्स्ट डिग्री के लिए पूछेगा कन्वर्ट मिथानेल टू इथानॉल, तो जस्ट हमें फर्स्ट डिग्री अल्कोहल के लिए जो रिएक्शन मिला उसको हम फॉलो करेंगे. देखो मिथानेल के लिए देखो H C डबल बॉन्ड O H सेम. इथानॉल होने के लिए इथेन बनने के लिए we need two carbon atoms. So since R is there, instead of R we just consider CH3 MgX. तो देखो डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा HCHOMgX और इसमें हमें CH3 आएगा. और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होने के बाद देखेगा HCHCH3OH प्रोटॉन और ये इथानॉल, ये हमारे लिए इथानॉल. देखो इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन आएगा तो convert the following methanol to ethanol. Just we follow the preparation of first degree alcohol. Similarly, suppose मान लीजिए it is any aldehyde. Suppose हम यहाँ पे हम क्या लगाएंगे CH3 लगाएंगे. ये क्या बन गया? ये इथानेल बन गया. इथानेल टू अगर इसमें और हमने CH3 ग्रुप लगाएंगे CH3 तो डेफिनेटली यहाँ पे भी CH3 होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा, CH3 तो क्या बन गया सेकेंड डिग्री अल्कोहल ऑलरेडी बन गया. तो लॉन्गेस्ट स्टेप कंसीडर करो 1 2 3 तो इसका नाम प्रोपेन टू ऑल आएगा क्वेश्चन. तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इथानेल टू प्रोपेन टू ऑल. जस्ट वी फॉलो द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अल्कोहल. एंड सिमिलरली थर्ड डिग्री सपोज मान लीजिए ये भी CH3 ये हमारे लिए एसीटोन और प्रोपानॉल. तो देखो इसमें हमने CH3 कंसीडर किया, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड CH3 बस CH3 लिखना. इंस्टेड ऑफ एल्काइल ग्रुप वी कंसीडर मिथाइल ग्रुप. तो क्या मिला लॉन्गेस्ट थिंग कंसीडर करो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल. इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल. In this way we can easily prepare first degree, second degree and third degree alcohol. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हम R कंसीडर करेंगे और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा तो कन्वर्ट द फॉलोइंग मिथानेल टू इथानॉल, इथानेल टू प्रोपेन टू ऑल और एसीटोन टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल. तो ऐसे हमें जब करेंगे तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री का थर्ड डिग्री प्रिपरेशन मिल जाएगी. और एग्जामिनर कभी-कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा से व्हाट हैपेंड यस कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट हैपेंड व्हेन formaldehyde react with Grignard reagent and product is acidic hydrolyzed. Give only chemical equation. In such cases हम क्या करेंगे formaldehyde react with Grignard reagent same ultimately examiner ने क्या पूछा preparation of first degree alcohol. Understood everybody? Okay, thank you.